question goes to my friend and author, Dr. Anand Ranganathan. Dr. Anand Ranganathan, I want to ask you this. The clear message, and look at why we have deliberately in the introduction emphasized on the change in Russia's stand from 17th of August to now, is because in the middle there was the intervention of India, the Prime Minister specially sending the National Security Advisor, Mr. Ajit Doval, to Russia with a message. And we've seen what Putin said today. Will those who have been virtually mocking the Prime Minister, ab kya karenge, what will they do, they've been talking, good Taliban, don't they get the message that the Prime Minister means business and he's making first step, making the BRICS realize the same concerns that this region has? No, good evening, Navika. No, you're absolutely spot on. I think the hectic diplomatic activity, especially with Mr. Doval over the past week, have borne results. And I welcome PM Modi's statement, especially on economic cooperation amongst the BRICS nations. And by the way, here I speak as a layman because there are many more eminent experts on the panel I see. But I must say that I am also confounded to a large degree by him agreeing with the president of Russia, President Putin, saying that, quote, Afghanistan should not become a threat to its neighboring countries, a source of terrorism and drug trafficking, unquote. I mean, the Taliban must be hearing this and saying, so hum kya kare? Job chhod de? I mean, I ask you, what else is Afghanistan going to do under the Taliban if not become a source of terrorism and drug trafficking? Navika, it's like asking, let's hope Pakistan does not sponsor terrorism. I mean, what else are they going to do? What else have they been doing? Navika, there is no doubt that Afghanistan is going to be the biggest security threat in the coming years, especially for India. There is already talk of Pakistan coercing and cajoling its Afghan terror contingent to seep through our borders and create mayhem in Kashmir. This happened 3 days ago. We all know that Afghanistan was under Taliban 1, a perfect hub of terror and terror training. We suffered enormously because of it, Kandahar being the shining example there. There is no indication whatsoever that Taliban 2.0 is going to be any different. In fact, Navika, worryingly, it's going to be a lot worse, given that they now control a military with the most modern American equipment and armament. The second point, very briefly, Navika, that many may have missed since the evening, but one must say this, again I emphasize as a layman, is the profound irony of waxing eloquent on the BRICS platform of economic, health and security cooperation, when the C in BRICS has single-handedly sabotaged the world economy, the world health and world security. Furthermore, this C is going out of its way in laying out the red carpet for the Taliban. They have just provided them with a large aid. They are massively fructifying their strategic interests in Pakistan, in Afghanistan, with the helping hand being provided by their friend, the terror state that is Pakistan. China, Navika, is the big winner to come out of the Afghanistan situation. If you think that's true, Dr. Anand Ranganathan. That's true. I mean, are you saying that the Taliban is not a source of worry, that the Taliban is not a terror organization? Of course it is, but it is there right now. The fact is that we will have to build up a consensus amongst nations across the world in terms of recognition of Taliban and keeping the pressure on Taliban on how to behave and how to deal with India, and that's a starting point. I mean, that's the point that I was making. Of course they will do drug trafficking, but how will it pan out from here if there are sanctions on them, if there is world pressure on them? The point that I was trying to make in the introduction was very clear, that of course, it's bad news that Taliban, Pakistan are coming together and then they have their big boss China sitting with them. It's a nightmare that's really playing out in front of us. But India is putting some sure steps forward to get other larger countries around to understand the danger that this region faces. And to that extent, I'm saying that today it has been demonstrated by the Prime Minister that this happened. Russia said something else 3 weeks ago, said something else today. Dr. Anand Ranganathan, you wanted to come in for 10 seconds before I go to the other experts that you referred to, Ashutosh ji and of course Tehseen Poonawala.
Yes, no, very briefly, I must say that I compliment Ghanshyam for his views and appreciating what the Prime Minister said. And I have to say this, Navika, that Ghanshyam, whatever may be the views of his party members, Ghanshyam belongs to a military family. So his first and foremost, he will always stand with India, and I'm absolutely certain of that. I'm glad he's done. सुधांशु जी से मैं एक ही बात पूछना चाहूंगा. सुधांशु ने बहुत अच्छी बात कही कि ब्रिक्स जो है एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हम पानी कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं. सुधांशु जी, ब्रिक्स में एक डिक्टेटरशिप चाइना भी है. चाइना ने कहर ढा दिया है पिछले 2 साल से. क्या हमने ये ब्रिक्स प्लेटफॉर्म को लेके चाइना को लताड़ा है कि उन्होंने ये कोविड लीक कैसे किया लैब से? क्या हमने कहा है कि वो हमारे 20 सोल्जर्स कैसे मारे गए हैं? क्या हमने कहा है कि वो अभी टेररिज्म को कैसे सपोर्ट कर रही है हमारे दोनों बॉर्डर्स? तो ऐसे प्लेटफॉर्म का यूज क्या है? मैं आपसे फिलोसॉफिकली पूछ रहा हूं. ऐसे प्लेटफॉर्म का यूज क्या है कि अगर हम सिर्फ एक मेंबर है, वो सिर्फ गलतियां कर रहा है, उसको हम पॉइंट भी ना करें क्या गलतियां कर. सुधांशु जी. हाँ, आनंद रंगनाथन जी, शायद आपने मेरा स्टेटमेंट स्किप कर दिया होगा. Prior to 2016, there was no issue of terrorism ever discussed on the platform of BRICS. It was under the chairmanship of Prime Minister Modi when we insisted, and the issue of terrorism was included. Then our instance in 2017, the counter-terrorism network was established. Then in subsequence of that, the meeting of NSAs of the BRICS has taken place. So, हमारे ही प्रभाव की वजह से वहां पर टेररिज्म का इशू आया है, जो कि उस समय चाइना नहीं चाहता था कि इस ढंग के कोई इशू आए. और जो मैंने अभी बाद में बोला कि मिसयूज ऑफ इंटरनेट फॉर द पर्पस ऑफ टेररिज्म, यह भी हमारा इस बार का इनिशिएटिव है. और इसमें 2 वर्कशॉप हुई और दोनों इंडिया के इनिशिएटिव पे हुई, मोदी जी के चेयरमैनशिप में हुई. तो इस प्लेटफॉर्म पे हम जितना उस दिशा में आगे बढ़ सकते थे, जो आपने कहा, योर कंसर्न इज very appropriate and it has to be concern of every Indian, and Modi ji is working in the same direction as far as BRICS is concerned. Let me get in Tehseen. कोई एक साइड पर रहेंगे ना. नहीं, दोस्त भी नहीं है, दुश्मन भी नहीं है. इनको सब कुछ इंस्टेंट कॉफी के साथ की तरह चाहिए. डॉक्टर आनंद रंगनाथन. नहीं नाविका, वेरी ब्रीफली 2 points. नंबर 1, आज वही लोग कह रहे हैं एस्टोनिशिंगली कि इंडिया, व्हाई डजंट इंडिया अटैक एंड इन्वेड अफगानिस्तान? 2 साल पहले वही लोग हैं जो जब हमने पाकिस्तान पे अटैक किया था उनके टेररिस्ट कैंप पे, तो प्रूफ मांग रहे थे. वाह, 2 साल में क्या बदल गया. और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, तालिबान और पाकिस्तान दोनों, अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने तो सीआरपीएफ के जो जवान मरे, उसका भी प्रूफ नहीं दे पाए. प्लीज डोंट. आप तो वो प्रूफ भी नहीं दे पाए. सीआरपीएफ के जवानों को उड़ाने के लिए 300 किलो आरडीएक्स किस तरह से कश्मीर में आ गया, आप आज तक जवाब दे पाए? आपके मोदी जी ने जवाब दिया, बीजेपी ने जवाब दिया, कोई जवाब नहीं दिया. मोदी जी नहीं, आपने कहा आपके मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं. हसन साहब, आपके प्रधानमंत्री कौन है? हसन साहब, आपके प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी तो हमारे हैं, हमने मान लिया. आपके प्रधानमंत्री कौन है हसन साहब? इमरान खान? इनके इमरान खान हो. नहीं, आप बार बार कह रहे हैं आपके मोदी जी, आपके मोदी जी. आपके प्रधानमंत्री नहीं है क्या? मोदी जी मेरे नहीं हो सकते. अच्छा, मोदी जी आपके नहीं हो सकते, तो आपके इमरान खान ही होंगे. इमरान, बहरहाल आनंद रंगनाथन जी wants to make a point. आपने अपना पॉइंट कह दिया. अब जवाब सुन लीजिए आनंद. Can I also make a point? नाविका, कमाल की बात है कि देखिए आपने क्या निकाला है, क्या निकल के आया है कि कह रहे हैं कि मेरे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नहीं है. तो भाई कौन है आपके प्राइम मिनिस्टर? इमरान खान या अभी जो नए बने मुल्ला बरादर और समवन लाइक दैट? नंबर 2, नाविका, दिस पॉइंट हैज नॉट बीन मेड. तो वकील बने रहे. नाविका, आई कैन नॉट कंटिन्यू इफ आई एम वो वकील नहीं है, साइंटिस्ट है, ऑथर है, प्रोफेसर है, पढ़े लिखे हैं. आप तो स्टूडेंट्स यूनियन में रहे हैं. आप वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हैं. सुन लीजिए, प्रोफेसर साहब है यूनिवर्सिटी के. काम डाउन. आई एम लोअरिंग योर फेडर बिकॉज नेटवर्क ठीक नहीं है उनका. आप उनको बोलने की इजाजत दें, आपको काउंटर करने का मैं टाइम दूंगी. रंगनाथन जी.
हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था नाविका, इट इज वेरी स्टार्टलिंग दैट बोथ अफगानिस्तान राइट नाउ अंडर तालिबान एंड पाकिस्तान refuse to condemn China for interning 1.5 million Uyghur Muslims camps, feeding them pork and mass sterilizing them. This is the power that China wields. And this is what I want to say, that in BRICS we must be very wary that we have a confederacy of sheep discussing about economy, about health, when the wolf is right sitting in the middle of them. The wolf being China. What do we do about it? Sudhanshu ji has to explain that. I'm sorry. सुधांशु जी has to explain. बिल्कुल आप डॉक्टर आनंद रंगनाथन, लेकिन बस ये हर रोज हिंदुओं से डिबेट मत रखिए, यूपी चुनाव आ रहा है उसे बढ़ाइए। Now, very quickly, Navika, very quickly, 2 points, if I can make, without people disturbing me. Thank you so much. Navika, I have to say that I do agree. just 10 seconds. Won't take more than 10 seconds. That I am so pleased with the point that my good friend Ashutosh has made. In fact, he has a serious good point. He has made a very good point, which is that I still understand कि हसन साहब ये कहने को तैयार नहीं कि तालिबान टेरर स्टेट नहीं है, लेकिन आई एम शॉक्ड एंड स्टन्ड कि डॉक्टर त्रिवेदी भी ये कह रहे हैं और ये कहने पर तैयार नहीं है कि तालिबान टेरर स्टेट है। नंबर 2, तहसीन। अब आप आना तहसीन, आपके लिए मेरे पास एक छोटा सवाल है। You know, in 2009 or 2010 or thereabouts, the Congress party. अरे भाई आपने सुना नहीं आनंद रंगनाथन? अरे मैंने तो बोला टेररिस्ट है भाई, आप सुन नहीं पाए शायद, बिकॉज ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम। गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा है कि टेररिस्ट स्टेट है तालिबान, नहीं कहा ना? नहीं कहा है क्या? नहीं कहा एग्जैक्टली। तालिबान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं कहा आपने। मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। तो नाविका, 2009 में कांग्रेस गवर्नमेंट और राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने चाइना के साथ एमओयू किया। अब हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी, तहसीन also is so kind towards the minority, especially Muslim minority. I want the Congress party to abrogate that MOU in light of the fact that China has interned 1.5 million Uyghur Muslims to concentration camps and mass sterilizing them. Tehseen, would you please take this matter up with Rahul Gandhi and say, I want to abrogate